Welcome viewers, you are welcome to the introductory class of trigonometry. This is the trigonometry for beginners. Initially, students को पता नहीं चलता है कि trigonometry क्या है, कैसे अप्लाई करें. This is the very important branch of mathematics. After 10th exam, in 11th class, it's very necessary to learn something more about trigonometry. It has a wide application not only in science, but not only in mathematics, but also in every sector of science. Trigonometry. Trigonometry is the combination of two Greek words. One is trigonon, another is metron. Trigonon means triangle, metron means to measure. So, trigonometry means measurement of triangles. Trigonometry actually is a branch of mathematics. Trigonometry is a branch of mathematics where we will study the measurement of triangles. So, not only the measurement of triangles, but also the relation between the length of sides and its angles. So, trigonometry is a branch of mathematics which deals with the study of measurement of triangles. So, measurement of triangle means the relation between the length of sides of triangles with its angles. It is defined as, trigonometry is defined as the branch of mathematics. First, it's the branch of mathematics. And यहाँ क्या पढ़ेंगे? Which deals with the study of, यहाँ पढ़ेंगे measures of triangles. Triangles के measurement पढ़ेंगे. और क्या पढ़ेंगे? Relation between length of sides and angles. Actually, in a triangle, there are 3 sides and 3 angles. तो length of sides और angles, इसका relation. The very important branch of mathematics in which relation between angle and sides are described is trigonometry. So, trigonometry is that branch of science where we learn the relation between length of sides and angles. So, this is the definition of trigonometry. First is angle. What is an angle? The first definition, when two rays meet each other. Suppose OA and OB, these are two rays. If two rays meet each other at a point O. So, ये two rays जब meet किए एक point O पर, then यहाँ एक geometric figure, geometric shape form हुआ, geometric shape create हुआ. So, this geometric shape is known as angle. बहुत सारा टाइम हम जब पूछे स्टूडेंट्स को कि एंगल क्या है, तो उसको पता है एंगल क्या है, बट वो डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसको पता नहीं एंगल क्या है. तुमको भी जब पूछा जाएगा व्हाट इज एन एंगल, तुमको पता है फ्रॉम क्लास 4 यू आर रीडिंग अबाउट एंगल बट यू कैंट डिस्क्राइब. सो व्हाट इज एन एंगल? फर्स्ट थिंग इज एंगल इज ए ज्योमेट्रिक फिगर. एंगल इज ए ज्योमेट्रिक फिगर. द डेफिनेशन ऑफ एंगल इज ए ज्योमेट्रिक फिगर. देन वी कैन से हाउ इट इज फॉर्म. वो कैसे हुआ? पहले क्या है, ये ज्योमेट्रिक फिगर है. बाद में क्या हुआ, कैसे फॉर्म हुआ. कैसे फॉर्म हुआ? व्हेन टू रेस मीट ईच अदर एट ए पॉइंट ऑन ए प्लेन. एक प्लेन के ऊपर जब दो रेस मीट किए, द ज्योमेट्रिक फिगर व्हिच इज फॉर्म इज नोन एज एंगल. देखो कितना आसान हो गया. सो व्हाट इज एंगल? द एंगल इज ए ज्योमेट्रिक फिगर. ये जो ज्योमेट्रिक फिगर हुआ वो है एंगल. सो द एंगल इज ए ज्योमेट्रिक फिगर व्हिच इज फॉर्म्ड. वो कैसे हुआ? व्हेन टू रेज मीट ईच अदर एट ए पॉइंट. टू रेज जब एक पॉइंट पर मीट किए, ये जो ज्योमेट्रिक फिगर फॉर्म हुआ, दिस ज्योमेट्रिक फिगर इज नोन एज एंगल. सो दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन. एंड सेकेंड डेफिनेशन इज, लुक एट हियर. और एक इम्पोर्टेंट तरीका से हम डिस्क्राइब करेंगे एंगल को, व्हिच इज द वेरी इंपॉर्टेंट मेथड टू डिफाइन एन एंगल. सो लुक एट हियर. सपोज दिस इज OA. OA is a ray. I am keeping fixed this point. OA is a ray. अब मैं क्या करूँगा कि वो पॉइंट को फिक्स कर दूंगा, इसको मूव नहीं करूँगा. इसको फिक्स करके ये जो रे है उसको घुमाऊंगा, रोटेट करूँगा. कैसे? ओ को फिक्स कर दिया, अब ये रोटेट करेगा ऐसे. जब रोटेट करेगा तो रोटेट करने के बाद क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम ये जो OA रे वो जाके एक न्यू पोजीशन पे रहेगा. सपोज दिस न्यू पोजीशन ऑफ OA इज OB. लुक एट हियर. OA
वो एक रे था जिसको रोटेट करने के बाद क्या हुआ, आफ्टर सम रोटेशन, आफ्टर सम टाइम ओ बी पर पहुंच गया। ओ ए इज द रे, आफ्टर सम टाइम जब रोटेट किए, रिवॉल्व किए, तो ओ बी पर पहुंच गया। सो डियर स्टूडेंट्स, इधर क्या हुआ, ओ ए एक रे है, इसका न्यू पोजिशन ओ बी। सो दिस इज द फर्स्ट पोजिशन एंड दिस इज द एंड पोजिशन, दिस इज द इनिशियल पोजिशन, दिस इज द टर्मिनल पोजिशन। नाउ आफ्टर रोटेशन एक ज्योमेट्रिक फिगर फॉर्म हो गया एंड दिस ज्योमेट्रिक फिगर इज एंगल। सो दिस ज्योमेट्रिक फिगर इज एंगल। सो एंगल का और का डेफिनेशन क्या हुआ है, जब एक रे को हम रोटेट करेंगे तब जो ज्योमेट्रिक फिगर उत्पन्न होगा, द ज्योमेट्रिक फिगर व्हिच इज फॉर्म्ड आफ्टर रोटेशन ऑफ ए रे, दैट ज्योमेट्रिक फिगर इज आल्सो एंगल। सो हम लिखते हैं द ज्योमेट्रिक फिगर व्हिच इज फॉर्म्ड, द ज्योमेट्रिक फिगर व्हिच इज फॉर्म्ड सेम व्हेन, इधर भी व्हेन था, इधर व्हेन था। व्हेन क्या हुआ, द रे इज रोटेटेड, एक रो के रोटेशन किया, कब, कैसे, कीपिंग द एंड पॉइंट फिक्स आए। तो ये जो रश्मि था, ये जो रे था, इसका एंड पॉइंट को फिक्स कर दिया, इसको रोटेशन कर दिया। रोटेशन करने के बाद जो ज्योमेट्रिक फिगर हो गया, दिस इज नोन एज एंगल। सो इसको हम कहते हैं एंगल। सो एंगल का 2 डेफिनेशन मिल गया। तो एंगल में होता है क्या, एंगल में क्या क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है, ये फिक्स्ड पॉइंट को कहते हैं वर्टेक्स। और द इनिशियल साइड, जहाँ से वो रे फर्स्ट पोजीशन में था, जहाँ से स्टार्टिंग हुआ था, ये जो 2 साइड्स है इसको कहते हैं साइड्स और आर्म्स ऑफ एंगल्स, दिस इज एंगल। एंड ये जो ओ ए ओ बी, इसको आर्म कहते हैं और साइड कहते हैं। लेकिन ये जो 2 साइड्स है इसका नाम भी अलग होता है, इसको कहते हैं इनिशियल साइड। इनिशियल साइड, इनिशियल मतलब शुरू हुआ, एंड दिस इज टर्मिनल साइड, टर्मिनल साइड। सो in an angle there is a vertex and there are 2 sides, one side is initial side and another is the terminal side. In many places I generally ask the students how to measure an angle and what is the name of the instrument by which we can measure the angle, किस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम एंगल मेजर कर सकते हैं। सब बोलते हैं प्रोट्रैक्टर। जब मैं पूछता हूँ तो प्रोट्रैक्टर में क्या करते हैं, राइट से लेफ्ट जाते हैं या लेफ्ट से राइट जाते हैं, सब बोलते हैं राइट से लेफ्ट जाते हैं, लेकिन क्यों जाते हैं कोई नहीं बोल पाते। मतलब हमको पता नहीं हम एंगल कैसे मेजर करेंगे। शुरुआत से हमको बता दिए गए, बचपन से हम जब पढ़ रहे थे 4 और 5 क्लासेस कि एंगल कैसे मेजर करेंगे, ऐसे मेजर करेंगे, राइट टू लेफ्ट जाए, राइट टू लेफ्ट जाएंगे। लेकिन प्रोट्रैक्टर में लेफ्ट टू राइट भी है, राइट टू लेफ्ट 1 to 180 है, लेफ्ट टू राइट भी 1 to 180 है। लेकिन हम राइट टू लेफ्ट क्यों जाते हैं हमको पता नहीं। हम एंगल मेजर करते हैं लेकिन पता नहीं क्यों, पता नहीं। आज हमको पता चलेगा हम एंगल कैसे मेजर करते हैं। इससे पहले सबसे वेरी इंपॉर्टेंट इज द टाइप्स ऑफ एंगल्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंगल्स, वन इज पॉजिटिव एंगल, अनदर इज नेगेटिव एंगल। So what is positive angle and what is negative angle? Look at here. Suppose this is, मैंने बोला था रोटेशन जब होगा तब एंगल होगा। Suppose this is a ray OA and here I take a ray OA. अब इसको रोटेशन करूँगा, कैसे, देखो OA रोटेशन करने के बाद क्या हुआ, O जाके पहुँच गया OB, न्यू पोजिशन इज OB. So the rotation is like this, OA to OB. So here this is initial side and this is terminal side. So look at here, here is OA. इसको रोटेशन करूँगा, कैसे, ऐसे। सपोज रोटेशन करने के बाद ये आकर पहुँच गया OB हो गया। सो यहाँ से शुरू हुआ था, दिस इज इनिशियल साइड and this is terminal side. Look at here. Here is from OA to OB, here is from OA to OB, but this rotation is like clockwise. हमारा क्लॉक में जो हैंड से आवर हैंड, मिनट हैंड, वो जब रोटेशन करते हैं उसको क्लॉकवाइज रोटेशन कहते हैं। इधर जो रोटेशन हुआ वो क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ, लेकिन दिस रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज। हियर द रोटेशन इज clockwise direction.
में रोटेशन, हियर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हुआ, बट हियर जो रोटेशन हुआ अगेंस्ट क्लॉकवाइज, दैट मीन्स दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, याद रखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंगल्स। एक एंगल होता है जब क्लॉकवाइज में और दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज में, बट इन मैथमेटिक्स द एंगल व्हिच इज फॉर्म्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है उसको पॉजिटिव एंगल कहते हैं। सो दिस एंगल इज पॉजिटिव एंगल। क्यों? ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ, इसको कहते हैं नेगेटिव एंगल। सो डियर स्टूडेंट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंगल्स, पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल। When we are measuring an angle, we are measuring the positive angle, we are not measuring the negative angle. So as we are measuring the positive angle, that's why we have to move in positive direction, that means anti-clockwise direction, that means from right to left. That's why when we are measuring an angle in the help of protractor, we are moving from right to left because we are measuring the positive angle. Now is measure of an angle. That means suppose this is the angle, suppose AOB is the angle. Measure of angle means, dear students, this angle is formed when the ray OA is revolved from OA to OB. जब ये एंगल कैसे हुआ? OA रोटेशन किया, ये एंगल कैसे हुआ? आफ्टर द रोटेशन ऑफ OA टू OB. सो जब ओ ए रोटेशन हुआ, जब ओ ए का रोटेशन हुआ तो ओ ए यहाँ से यहाँ तक रोटेट हुआ। जब यहाँ से यहाँ तक रोटेट हुआ, दैट मीन्स कितना रोटेशन हुआ? इतना ही रोटेशन हुआ। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन एंड दिस अमाउंट ऑफ रोटेशन इज नोन एज द मेजर ऑफ एंगल। मेजर ऑफ एंगल मीन्स राइट, मेजर मीन्स एम ऑफ ए ओ बी. M of OAB means measure of that angle, means quantity of that angle. वो एंगल कितना है? हम बहुत बार लिखते हैं M of OAB. A means the measure, मतलब एंगल का क्वांटिटी कितना है. क्वांटिटी मतलब कितना रोटेशन हुआ. सो मेजर मीन्स, मेजर ऑफ एन एंगल मीन्स अमाउंट ऑफ रोटेशन. दिस इज अमाउंट ऑफ रोटेशन. सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, हमको एंगल क्या पता चल गया, उसका मेजर मीन्स नॉट मेजरमेंट, मेजर क्वांटिटी, मेजर मीन्स द अमाउंट ऑफ रोटेशन, वो एंगल कितना रोटेशन होता है. सो द अमाउंट ऑफ रोटेशन इज नोन एज मेजर. तो एक एंगल का मेजर क्या पता चल गया, तो ये जो एंगल है इसको मेजरमेंट कैसे करेंगे, मेजरमेंट करेंगे कैसे? तो मेजरमेंट करने के लिए सम यूनिट्स चाहिए और देयर आर थ्री सिस्टम्स टू मेजर एन एंगल. द थ्री सिस्टम्स आर, the first is sexagesimal or English system, centesimal or French system, circular system. In sexagesimal system, the unit of measurement of an angle is degree. मैं इधर लिख देता हूँ. And in case of centesimal, the unit is grade, and in case of circular system is radian. So these are the three systems to measure an angle. In order to define the relation, इसका definition, ये three methods का define करने के लिए राइट एंगल कंसेप्ट जरूरत है. तो राइट एंगल कंसेप्ट क्या है, राइट एंगल कैसे हम पता चलता है? देखो राइट एंगल कैसे, व्हाट इज राइट एंगल? सो डियर स्टूडेंट्स, सपोज दिस इज ए लाइन, इफ वी ड्रॉ अनदर लाइन, एक लाइन के ऊपर हम अगर एक दूसरा लाइन ड्रैग करेंगे, सो देयर क्रिएट्स टू एंगल्स. टू एंगल्स आर फॉर्म्ड व्हेन ए लाइन इज ड्रॉन ऑन अनदर लाइन. जब एक लाइन के ऊपर अनदर लाइन हम ड्रा करेंगे तो टू एंगल्स फॉर्म होता है. लेकिन क्या होता है, कभी टू एंगल इक्वल होता है तो कभी इक्वल नहीं होता है. इफ ए लाइन व्हेन ड्रॉन ऑन अनदर लाइन एंड टू फॉर्म द टू इक्वल एंगल्स, द टू इक्वल एंगल्स, इफ दिस टू एंगल्स आर इक्वल देन ईच एंगल इज ए राइट एंगल. जब एक लाइन दूसरा लाइन साथ जो टू एंगल्स फॉर्म करेगा, ये टू एंगल अगर इक्वल हो जाएंगे तो ये एंगल को हम राइट एंगल कहते हैं. फर्स्ट इज सेक्साडेसिमल सिस्टम. सेक्साडेसिमल सिस्टम, इन दिस सिस्टम द एंगल इज मेजर्ड, द एंगल इज मेजर्ड इन degrees, minutes or
seconds. These are the units. दिस मेथड में हम थ्री यूनिट्स यूज करते हैं एंगल मेजर करने के लिए. तो डिग्री क्या है? व्हाट इज डिग्री? हियर इफ ए राइट एंगल is divided into 90 equal parts, then each part is a degree. So 1 डिग्री क्या होता है? जब एक राइट एंगल को हम 90 इक्वल पार्ट्स कर देंगे. हमको राइट एंगल क्या पता है? एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद व्हेन राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स, एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो एक पार्ट को कहेंगे 1 डिग्री. सो व्हेन इधर का डेफिनेशन है इफ राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स देन ईच पार्ट इज नोन एज ए डिग्री. सो एक राइट एंगल का 190 पार्ट्स, एक राइट एंगल को 90 पार्ट्स डिवाइड कर देंगे तो हर एक पार्ट को क्या कहेंगे? 1 डिग्री. सो 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो दिस इज द सिंबल ऑफ डिग्री. अगेन ईच डिग्री is divided into 60 parts and each part is known as minute. So 1 degree is 60 minute. Again each minute is divided into 60 equal parts which is known as seconds. That means 1 minute is equal to 60 seconds. So this is the process to measure an angle in sexagesimal system, centesimal or French system. In this method the unit of measurement is, in this method unit is grade or minute or second. So these are the units used to measure an angle in centesimal system. ये मेथड में हम ग्रेड यूज़ कर सकते हैं, मिनट यूज़ कर सकते हैं, सेकेंड भी यूज़ कर सकते हैं. तो ग्रेड क्या होता है? हम अभी बताएं कि इंग्लिश सिस्टम में क्या हुआ कि इंग्लिश सिस्टम में एक राइट एंगल को 90 पार्ट्स डिवाइड कर दो, एक पार्ट जो आया एक पार्ट को बोलेंगे 1 डिग्री. व्हाट इज ग्रेड? सिमिलरली 1 राइट एंगल is divided into 100 equal parts. In case of previous इंग्लिश सिस्टम में क्या हुआ था? एक राइट एंगल को हम 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए थे. इधर क्या होगा कि 1 राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स. सो 100 इक्वल पार्ट करने के बाद ईच पार्ट इज नोन एज, देन ईच पार्ट इज ए ग्रेड, इज 1 ग्रेड. सो 1 ग्रेड इज 100th पार्ट ऑफ ए राइट एंगल. सो 1 ग्रेड को कैसे लिखेंगे? 1 ग्रेड इज 100th पार्ट ऑफ 1 राइट एंगल. सो हियर 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड. 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री बट 100 ग्रेड. ऑल्सो हियर क्या होता है कि each grade is divided into 100 equal parts. 1 grade is divided into 100 equal parts known as a minute. That means it is 100 minute. And each minute, 1 minute is divided into 100 equal parts which is known as 100 seconds. 1 minute is equal to 100 second. In this system, the unit of measurement is radian. So 1 radian क्या होता है? Look at here dear students. Suppose this is a circle. Center is O. OA is a radius. Suppose देखो OA is the radius. So let us take an arc. Suppose AB is the arc whose length is r. That means the length of a radius is same as length of a arc. So if AB is an arc, then join OB.
So this is the angle AOB is an angle which is made by the arc AB at center. So this angle is 1 radian. So what is 1 radian? So look at here, what is radian? So radian is the angle formed at the center. सेंटर में जो एंगल हुआ कैसे ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल का सेंटर में जो एंगल फॉर्म हुआ कैसे, बाय एन आर्क, एक आर्क सेंटर में जो एंगल फॉर्म किया, जो आर्क ऑफ लेंथ सेम एज रेडियस, मतलब हम ऐसा एक आर्क है जिसका लेंथ कितना है ना, रेडियस का लेंथ जितना है वो आर्क का लेंथ भी उतना ही है. सो रेडियस की लेंथ साथ समान हुआ एक आर्क सेंटर में जितना एंगल फॉर्म करता है, दिस एंगल इज नोन एज 1 रेडियन. वन कंप्लीट रोटेशन मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो कंप्लीट रोटेशन है, जो एंगल फॉर्म करेगा उसे कहते हैं 1 कंप्लीट रोटेशन इज इक्वल टू 2 पाई. एक एंगल को वी कैन राइट इन 3 फॉर्म्स लाइक एक्स, सपोज एक्स इज एन एंगल, वैसे हम एक्स डिग्री लिख सकते हैं, एक्स ग्रेड लिख सकते हैं, एक्स रेडियन लिख सकते हैं. बट हुयर कोई भी नोटेशन नहीं रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कोई भी नोटेशन नहीं रहेगा तो समझ लो कि दिस इज इन रेडियन. नाउ इज रिलेशन 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री which is equal to 100 grade, which implies, look at here, 1 degree is equal to 100 by 90 grade, that means 10 by 9 grade. Also if 1 degree is equal to this, then here 1 grade is equal to 9 by 10 degree. So this is the relation between degree and grade. And now the relation between degree and radian, we have pi radian is equal to 180 degree and 1 radian is equal to 180 by pi degree, and 1 degree is equal to 180 divided कर दो pi by 180 radian. So these are different types of angles: acute, obtuse, right, complementary and supplementary. And these are the different types of triangles: scalene, isosceles, equilateral, right triangle and right angled isosceles triangle. You know it in high school. Trigonometric ratios, हमको पता है कि there are 6 trigonometric ratios, but many times मैंने students को पूछा हूँ कि why these are 6 number, क्यों ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 6 है, 7 नहीं हुआ, 8 नहीं हुआ, कोई भी मुझे आंसर नहीं देते. सो आज हम दिखेंगे एक्चुअली क्यों देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, या 8 नहीं हुआ, 4 नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ. सो लेट ए बी सी बी ए राइट ट्राइंगल व्हेयर एंगल बी इज 90 डिग्री. नो डाउट यू नो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज हाइपोटेनस and AC, which is the front side of right angle, is the hypotenuse. Now AB and BC, the two sides are, one is perpendicular, another is base. Many students don't know which one is base, which one is perpendicular. The students generally know BC is base and AB is perpendicular, but not like this. BC can be base, BC can be perpendicular. ये perpendicular हो सकता है, ये base भी हो सकता है, ये perpendicular हो सकता है, ये भी base हो सकता है, कोई भी कुछ हो सकता है. कैसे? दैट डिपेंड्स अपॉन द एंगल. क्योंकि ये 90 डिग्री जाने के बाद ये जो 2 एंगल्स रहेंगे, ये 2 एंगल्स आर लेस देन 90, मीन्स दिस 2 एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स. ये दोनों एंगल एक्यूट एंगल है. सो इफ वी टेक दिस एक्यूट एंगल एज थीटा, so this will be base and this will be perpendicular. But if we will take this angle theta, then this will be perpendicular. That means which line will be base, which will be perpendicular, that depends upon the angle which we are considering. Suppose we take this angle as theta. Now this is P, this is B. So look at here, there are 3 sides. There are 3 sides, and to each angle मैंने बोला था why there are 6 trigonometric ratios. Look at here, very important.
एवरी एंगल इज एसोसिएटेड विथ टू साइड्स, हर एक एंगल के साथ टू साइड्स लगे हुए हैं। जैसे कि सी एंगल के साथ सी एंगल का एडजेसेंट साइड्स है एच एंड बी। सो एच एंड बी, सिमिलरली ए इज द एंगल, द एडजेसेंट साइड्स आर पी एंड एच। नाउ हम रेशियो निकालेंगे। देखो P और H ये दोनों का अगर रेशियो निकालेंगे तो वन होगा P बाय H, अनदर होगा H बाय P। तो मुझे बताओ कितना रेशियो निकाले? टू रेशियोज। सो दीज टू रेशियोज आर फॉर्म्ड फ्रॉम एंगल A। सो when we take angle A we get टू रेशियो, बिकॉज ए के साथ टू एडजेसेंट साइड्स ए पी एंड एच था। सो ए के साथ पी एंड एच टू साइड्स था। सो टू साइड्स पी एंड एच को लेके टू रेशियो ही हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है क्या? तो वी गेट टू रेशियोज फ्रॉम वन एंगल। देयर आर थ्री एंगल्स। सो इफ one angle gives two ratio, then three angles gives 3 into 2 6 ratio. That's why there are 6 trigonometry ratios, and these 6 trigonometry ratios, there are 6 T ratios. T ratios means trigonometry ratios. They are sine, cosine, tangent, cotangent, secant and cosecant, and we call them in short sine, cos, tan, cot, sec and cosec. So these are the 6 trigonometry ratios. So actually what happens, these 6 trigonometry ratio का वैल्यू कैसे निकालेंगे? So 6, so देखो these are the ratios. So these are the ratios and I say these are the ratios. So ये जो trigonometric ratios है, the value of these trigonometric ratios are this. Now how can we find? We are evaluating the trigonometric ratio of an angle, but it is expressed in form of side, the ratio of sides. How? Look at here, theta is the angle, then the sine value of theta, sine theta is P by H, and cos ratio, cos theta is B by H, tan theta is P by B, cot theta is B by P, sec theta is H by B, and cosec theta is H by P. So these are the 6 trigonometry ratios. से इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि हम किसका निकालते हैं ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। देखो थीटा का निकाला है, मतलब ट्रिगोनोमेट्री रेशियो हम निकालते एंगल का, एंड द ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज वैल्यूज, द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज कैन बी एक्सप्रेस्ड as ratio of sides. So these are the ratio of sides. So that's why as these trigonometry functions are expressed as ratios, that's why we say these are trigonometry ratios. Look at here, cosec theta is equal to h by p. That means this is 1 by p by h, means 1 by sin theta, p by sin theta. So cosec theta is equal to 1 by sin theta and sin theta is equal to 1 by cosec theta. Similarly, sec theta is equal to 1 by cos theta and cos theta is equal to 1 by sec theta. Cot theta is equal to 1 by tan theta and tan theta is equal to 1 by cot theta. Again, tan theta is equal to P by B, and this can be P by H by B by H, but P by H is sin theta, so this is sin theta by cos theta. If tan theta is equal to sin theta by cos theta, then cot theta is equal to 1 by tan. Here cot is equal to 1 by tan, that means this is cos theta by sin theta. These are three important identities: sin square theta plus cos square theta is equal to 1, sec square theta minus tan square theta is equal to 1, cosec square theta minus cot square theta is equal to 1. मैं एक प्रूफ कर देता हूँ. The first one is given sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Sin theta is P by H and the square for P by H. Cos theta is B by H, and this is P square by H square plus B square by H square is equal to P square plus B square by H square,
And we know from Pythagoras theorem p square plus b square is equal to a square, and this is a square by a square is equal to 1. Similarly, others can be proved, and these are very important formulas. Like here, sin square theta is equal to, from this I am saying sin square theta is equal to 1 minus cos square theta. Cos square theta is equal to 1 minus sin square theta. That means if तुमको sin theta का वैल्यू दिया गया है, cos theta निकाल सकते हो. If you have cos theta given, then you can find sin theta. Similarly here, if tan theta given, sec theta can be found. If sec given, tan can be found. So this is the relation which can. Hope you enjoy the trigonometry for beginners. And in the next class, I will discuss the trigonometry ratio of complementary angle and supplementary angle. Thanks.